आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार सर अभी नहीं कहना होगा। आज मैं बुलाता हूँ। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। सो प्लीज सर, आप बोले पर हाथ मत जोड़े। Sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खाती पैसे थोड़ा बता दे। Sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर, ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले। LOP है तो इसका मतलब ये नहीं है। LOP का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर, हम लोग सुनना चाहते हैं। सर, स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं। और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसका क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। Should I leave? Then you speak. Should I leave? You speak then. You speak. What is it? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the subject में नहीं आपका lobby. आपका lobby subject में नहीं. ये विषय कर रहे हैं. The discussion. One second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट
एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। माननीय सदस्य में बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें, आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए, प्लीज मानिए। On choosing exactly who the election commissioner is going to be. Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner
and the Election Commission. First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट. A BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now, let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. मौका था संसद भवन में चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा, चुनाव के सुधारों पर चर्चा, और इसी मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मौके पर सदन में बोलते हुए बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि एक के बाद एक बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट संस्थाओं का ब्लैकमेलिंग कर रही, संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रही है, और एक तरीके से उन्होंने पूरी संस्थाओं पर अपना कब्जा जमा लिया है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, और चाहे वाइस चांसलर्स हों जो कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया कि किसी भी वाइस चांसलर की नियुक्ति जो हो रही हो बीजेपी के नेता के इशारे पर हो रही हो या एनडीए गवर्नमेंट के इशारे पर हो रही हो। योग्यताओं को और वैज्ञानिक योग्यताओं को और सभी मापदंडों को एक तरफ से एक हाशिए पर रख दिया गया है, और जो चुनाव हो रहा है, जो वाइस चांसलर्स चुने जा रहे हैं, वो वाइस चांसलर्स का सिलेक्शन भी बड़ी पार्टी के दम पर ही हो रहा है। इस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने कई सारे आरोप जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लगाए, और एनडीए की सरकार इस मामले में चुप रही, और अमित शाह और कई वरिष्ठ नेता, किरण रिजिजू वगैरह, ये सभी लोग एक तरफ सुनते रहे। इसी बीच वोट चोर, गद्दी चोर जैसे नारों से संसद भवन गुंजायमान रहा, हल्ला होने लगा, और साथ साथ ये भी बात आई कि बीजेपी संस्थाओं का दोहन कर रही है। एक ब्राजीलियन मॉडल है, वो ब्राजीलियन मॉडल का नाम हरियाणा के चुनाव में बार बार आया सामने, और इस तरीके से बार बार जो फर्जी वोटिंग हो रही है, इसी के सहारे बीजेपी की गवर्नमेंट कई सारे राज्यों में जीत रही है। और इस तरीके के कई सारे जबरदस्त आरोपों के साथ कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एनडीए गवर्नमेंट पर निशाना साधा। तो उनकी काफी जोरदार इस भाषण को, जो कि अंग्रेजी भाषा में बोला गया था, और संसद के कई बड़े नेता उसे सुनते ही रह गए, यहाँ तक कि ओम बिरला को भी इस मामले में दखल अंदाजी करनी पड़ी, और उन्हें एक वरिष्ठ नेता को ये कहना पड़ा कि संसद भवन में आप हमें धमकी मत दीजिए। तो इस तरीके के
काफी हंगामेदार सत्र के इस विंटर सीजन के इस हंगामेदार भाषण के दरमियान आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात बुरी लगी? क्या राहुल गांधी का ये जो आरोप है कि बीजेपी वोट हैकिंग करके या वोट चोरी करके सरकार बना रही है और इस तरीके से लगातार जीत रही है, आपकी राय का, आपके विचारों का हमें कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप राहुल गांधी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आप अपने इस वीडियो के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उससे एक छोटा सा लाइक करिए और चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। ये हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए एक नई वीडियो बना सकें। आपको देश, दुनिया और जुर्म की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होता हुआ एक नया एपिसोड प्रस्तुत करने के लिए हम विदा लेते हैं। एक नई प्रस्तुति लेकर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सच्ची घटना को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।